So good morning, everyone. Welcome to our new webinar episode. I hope you all are doing well. So we have Mr. Yash Shah with us today for this webinar, and would like you to introduce yourself to our audience and tell them about what you do, what are your expert areas, so that this could help them in their journey. Over to you, Yash. Yeah, so thanks a lot, first of all, for this opportunity. So, myself, Yash Shah, and I have expertise of scaling up the business. So, I scaled the businesses for JSW, then Byju's, Vedantu, now Thermax. I have worked in the public, private, as well as in the government sector market. Yeah, that's in real of about my profile. Okay. Yash, the topic I think we have already, the challenges early stage entrepreneur faces will be the topic that we are going to discuss here on this platform, and will definitely help us out to all these aspiring founders who have already started with their journey or who are seeking such expertise at your end that you have gained in your previous years. So I would request you to please give little on the challenges early stage entrepreneur faces before I put on to the questions to you, sir. Yeah, sure. So initially you said ki currently what early stage startup entrepreneurs face the challenges. Yes. So initially they will face the problem of understanding the problem statement and finding the solution for that. Mm-hmm. At the same time, most of the founders they will be in confusion ki which market they have to follow, how they have to be in the market, how they can scale up that, right? So likewise, many more different problems are there depending upon the kind of market we consider, right? There is B2C, B2B, D2C is there nowadays. After internet boom, it's a growing one, right? So So you mean, yeah, please continue. likewise, these founders face the many different kinds of challenges and difficulties while growing their businesses. You mean to say like the entrepreneur should identify a real market need for the startup before they bring up the idea on. You are saying that. Exactly, Okay, so right. would you put some little more into this, like where they should emphasize on how they should start to understand the real market, because the real facts, because once who's starting the journey, they probably face these things okay, they have an idea, but that idea doesn't give them a market, right? To understand that market, what all exercises behind to be taken care of? Yeah. So initially, the problem statement, which I personally focus on, is very important, which tells you the whether this solution, what you are giving, it's relevant for the market or not, right? At the same time, the founder must and should know key what all the equivalent or alternative solutions are there in the market or not, right? At the same time, if there are many solutions, then need to understand key what will be the global market size, right? After that comes TAM, like total addressable market. After that, as a founder, he will consider the SAM, like serviceable addressable market. Mm-hmm. And in that specifically, how much as a founder, as you can capture in that area, Mm-hmm. specifically we are focusing on, that is SOM, that is serviceable or operationable market, Mm-hmm. right? One should one the founder should take care of these things before starting his business, or he can understand the real market product gap, right? Such that he can address that market. At the same time, these are the parameters like buyers and sellers like psychology, right? At the same time, whether it falls in tier metro cities, tier 1, tier 2, tier 3, they should know about that, right? At the yeah, these are the things
in the priorities one founder must and should know to understand the market need. So these are the basic areas they need to understand when we are creating and we are when they are starting for their entrepreneurial journey. Like these are the like SOM they need to understand, SAM they need to understand. They need to understand the global viability for that project certainly. But yes, what all mistakes they should avoid while getting into their entrepreneurial journey when there is a building of a product, but there are certain nitty-gritties of that product that they should understand. If they're coming up with a solution, what they need to understand means what mistakes they should avoid while creating, while providing, or while generating any solution to the system, or they would like to offer to the their TGs. Acha. So I will put it in another format such that your audience can relate to the topic, right? We'll consider, as most of the audiences of ours, they are from India and they have seen the Shark Tank platform, right? And Mhm. in that specifically, if we consider the example of Zipline, right? If you see that product, where that all the sharks have laughed on that product, right? At the same time, there is another one founder who has made that Nabi Shaper, right? Right. Mhm. So he's also wanted to try some crazy thing, which founders found out, or the sharks found out earlier that there is no market need for that product, right? Uh, and these are the kind of products where the saturation comes very early, right? Because those are not relevant problem statement and solution for in the market, You right? mean to say the But real-time check for the product they're offering to the market, there should be a real-time check. They should understand that. they should understand that. How they will understand? For that, they need to initially connect with their organic friends and family, the one who are there with them, and then they need to understand the exact feedback of theirs, right? And Mhm. accordingly they need to modify, refine, and then at the end, as per customer requirement, this their product will evolve after certain period of time, after giving certain time, and then we can say that product will be required in the market. So you mean to say means once they need to check the organic market, they need to understand the viability of the service or the product they're offering to the market inside their zone, the zone they are connected with. They should get the real-time check from them, and this will give a validation to the idea they are offering to the market. Exactly. Okay. Right. And why is validating a start like why is it important validating a startup idea before investing? When now, okay, the idea is now being checked inside the system. लोगों का अच्छा अनुभव रहा, लोगों ने अपना उस पर एक अच्छा जो है उस पर उनको फीडबैक दिया कि यस दिस इज डूएबल, हम इसको कर सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेज आती है जब वो उस आइडिया को लेकर इन्वेस्टर के सामने जाता है। when he goes to the investor investing, they have to proven this as well in front of them. Okay, this has a significance because I had done my homework prior, and this is the validation I have received from the system or inside the system that I have created this real time check. मैंने एक सर्वे किया या मैंने उसको इसके ऊपर एक तरीके से एक लोगों का उनको ये सर्विस फ्री में बताया, उन्होंने मुझे ये रियल टाइम चेक दिया। when this goes to the investor investment part, वहां हम्म। पर कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो इनिशियल स्टेज से बात करते हैं हम। जैसे कि हम्म। कंसिडर कर लो कि अभी चार फ्रेंड्स ने मिलके एक स्टार्टअप किया है, राइट? और हम्म। उनको वैलिडेशन इनिशियल स्टेज में मिला है उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से, नहीं हम्म। तो नियर मार्केट से, राइट? पर हम्म। आगे उनको स्केल अप करना है, तो उसमें क्या डिफिकल्टी चैलेंजेस आएगी और उनको कैसे वो प्लान और थिंक करना है, हम्म। राइट? हाँ, तो उसमें उनको पहले ये समझना है कि ज्योग्राफी वाइज और एरिया वाइज लोगों का
साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे चेंज होता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो कि महाराष्ट्र की फूड कंज्यूमिंग पैटर्न अलग है कंपैरेबली पंजाब का कंसिडर करोगे, पंजाब का अलग है कंपैरेबली गुजरात का कंसिडर करोगे, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कंज्यूमर पैटर्न, और उसके हिसाब से उधर रिलेवेंट एरियाज को, रिलेवेंट लोगों को वो सर्विसेज अवेलेबल करके देना, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म एट द सेम टाइम की स्टेजेस कैसे होती है इनिशियली, अभी 4 लोगों के साथ कर रहे हैं, नेक्स्ट वो पार्टनर बना सकते हैं, राइट। हम्म पार्टनर ऐसे बना सकते हैं कि उनको उनको वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे, राइट। नहीं तो वो उनके कंपनी में ओनरशिप दे, मतलब सबको एक ओनर की, नहीं तो फाउंडर मेंटेलिटी के हिसाब से वो जाए, तभी वो ग्रो कर पाएगा। नहीं तो एज ए एम्प्लॉय मेंटेलिटी से काम करने की कोशिश करेंगे, मतलब कंसिडर करते हैं ना, बहुत स्केल अप करने की कोशिश करते हैं, पर वो हम्म वर्कआउट नहीं होता। राइट। तो तो हाँ, मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस से वो ये है कि बेस्ट फिट, बेस्ट सोल्यूशन टू द राइट सेट ऑफ मार्केट, उनका जो है मेजर फोकस एरिया है वो ये रहना चाहिए। And they should also have an approach not to the employability, yes to the जहां पर वो अपने लिए पार्टनर्स या को फाउंडर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। exactly. Or in this all the scenario, the founder's vision, values, and mission is very important, राइट। क्योंकि और हर एक प्रॉब्लम में उसको वो अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, और उस तरीके से उसको वो कन्वर्जेंस करने हैं, राइट। आप एक ही वे में देखोगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा, राइट। तो आपके सब तरफ से सब कुछ ओपन रहना चाहिए कि एट द एंड में आप वो सेंस कर पाओ कि हाँ इधर अपॉर्चुनिटी है और ये मैं क्रैक कर सकता हूँ। राइट। हाँ, मीन्स ये मेरा अभी पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव यश ये बहुत ही सही है। मींस दे नीड नॉट टू स्टिक टू वन एंगल ऑफ थिंग, दे शुड आल्सो एक्सप्लोर द अदर हैंडल्स एंड एंगल्स फॉर देयर प्रोडक्ट। एंड उस सब्जेक्टिबिलिटी के साथ वो जाएंगे अप्रोच के साथ इन्वेस्टर के पास भी कि दिस इज द प्रोजेक्शन एंड हेयर आई लुक इन कमिंग फ्यू एग्जैक्टली। इयर्स, इन कमिंग फ्यूचर। बट वो क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा और जो है एम्फेसाइज कर सकते हैं। वंस आपने सारे पेन पॉइंट्स को कंसिडर किया, आपने अपने लिए एक ओपन एरिया रखा कि यस मेरा जो प्रोडक्ट है विच इज ओपन प्रोडक्ट, जो एक सर्विस देता है, जो एक सोल्यूशन देता है, जिसको मैं अपने इम्पैक्ट बैकग्राउंड में चेक करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो फाइनेंशियल्स या किसी फाइनेंशियल अथॉरिटी, इन्वेस्टर, वीसी के सामने रखता है, तो फंडिंग प्रोस्पेक्ट के लिए एक जो सामने से देखने के लिए उसके पास ऐसा क्या हो, व्हाट यूएसपी ही हैज टू प्रेजेंट कि वो उसके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आए। मेरा कहने का जो है इस टाइम आई थिंक मेरी ऑडियंस भी यही जानना चाहती है, क्योंकि आइडिया को बनाया, आइडिया को चेक किया, आइडिया में उन्होंने ऑप्शंस रखे कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज। नाउ दे रीचिंग आउट टू द वीसी फंडिंग राउंड सपोज। तो उस जगह पर पहुंचकर कौन सी ऐसी 3 चीजें हो सकती हैं जिस पर वो ध्यान दें? ओके, तो इनिशियली हमने डिस्कस किया कि स्टार्टअप के इनिशियल डेज कैसे होते हैं। हम्म आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स कंसिडर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, हम्म आपके फाइनेंशियल्स, आपके कैश फ्लोज, आपके नंबर्स सब कुछ बताना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म राइट। हम्म उसमें क्या पैरामीटर्स है, जैसे कि आप कंसिडर कर लो कि सेल्स के नंबर्स कैसे जा रहे हैं, हम्म राइट। एट द सेम टाइम प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, इबिटा क्या कहता है, राइट। हम्म प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या कह रहा है, हम्म नंबर्स क्या डिफाइन कर रहे हैं। और मोस्टली वीसीज और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वही फोकस करते हैं नंबर्स के ऊपर। हम्म एट द सेम टाइम वो इसके ऊपर भी फोकस करते हैं कि फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे अभी तक उसने किस तरीके से काम किया है, कितनी जेन्युइनिटी है उसके काम के ऊपर, कितना ट्रांसपेरेंट है, हम्म राइट। हम्म एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस करता रहेगा और मेरी एक्सपर्टीज रहती होगी, तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा और वो सिनर्जिस करने की कोशिश करूंगा, राइट। राइट। तो आई थिंक मेरे ऑडियंस के लिए काफी हद तक जो है एक लर्निंग सेशन रह सकता है, जहां वो ये समझ पा रहे हैं। मीन्स
आपने एक आइडिया को डेवलप कर कर उसके साथ उससे प्रेजेंट कैसे करना है, that presentability requires what all initials and what all essentials, वो अभी हमने उनके साथ शेयर करे. And according to statistics, what percentage of startup manage to raise VC funding round? Any emphasize if you would like to hear, give to my audience here. So, in this specific thing, that founders must and should know कि there are different kinds of VCs and angel investors are there, right? And everyone has their different area of expertise. कि कोई one is working in the AI and ML, one is working in the uh, like AR VR, one guy is working in the metaverse, right? Hmm. So they should understand that, and accordingly they should approach. If you consider the ratio, like if you reach the 100 people, Hmm. then approximately you can say 30% log you they will interested in you, right? And in that 50%, like तो उसमें 15 लोग कहेंगे आपको कि हाँ हम इसके ऊपर सुनेंगे आपकी बात सब कुछ, Hmm. राइट, और सोचेंगे उसके ऊपर. उसमें 8 लोग आपको ये कहेंगे कि हाँ हम आपको बताएंगे, विल गेट बैक टू यू लाइक एचआर, राइट. एंड उसमें एक और दो कन्वर्जन हो सकती है एट द. तो ये माइंडसेट बना के ही आपको वो 100 लोगों को पास रीच आउट करना है, वो एक वो कन्वर्जन होने के लिए. मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस से यहाँ पर कि आप ओपन रहें किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी फंडिंग पॉसिबिलिटी के लिए, वेयर एज आपको नहीं पता वो उस सेक्टर में काम करना चाहते हैं या नहीं. तो ये प्री एक्सरसाइज की तरीके से भी किया जा सकता है कि दैट यू शुड आल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वीसी फंड्स कैन बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट डोमेन. एग्जैक्टली, या. You were saying that हमारे founders के लिए एक checklist होना चाहिए when they are sitting in front of an investor. वो अपना homework in terms means अपना assignment पूरा करके वहां पर जाकर बैठे. उस assignment के लिए कुछ 4 points आप देना चाहेंगे? यस, तो पहला तो ये है कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, लाइक उसमें भी क्वालिटीज मैटर करता है. एट द सेम टाइम उनको उनके फाइनेंशियल कैश फ्लोज क्या बता रहे हैं ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कह रहे हैं, राइट. जैसे Right. कि 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें किधर किस किस डिपार्टमेंट के लिए कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, जैसे कि मार्केटिंग के लिए कितना स्पेंड कर रहे हैं, एचआर एंड एडमिन के लिए कितना दे रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए कितना दे रहे हैं, राइट. ये हम्म. पता होना जरूरी है. उसमें से उसको प्रॉफिट कैसे बना पा रहे हैं ये पता होना, ये बहुत सारे लोगों को फाउंडर्स को नहीं पता होता, जिधर वो मिस्टेक करते हैं. Very एट द सेम टाइम वो अभी किस स्टेज पर है और उनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स गोल्स, राइट. फाउंडर्स का विजन वैल्यूज क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है. ये बेसिक 2-3 प्रायोरिटीज मैंने बता दी कि फाउंडर को क्लियरिटी रहना बहुत जरूरी है. good. So, या. I think this is a very valid information that you have provided to our audience today. Yash, I really thank you, and thank you so much for your time, for your valuable inputs. And I believe this may help our entrepreneurs to understand how to take forward with their journey. And definitely, we'll be connecting with you soon and coming up with another session. Thank you, Yash. Thank you for your time. Yeah, it's pleasure of mine कि you gave me the opportunity, and we discussed so fruitfully such that our audience can gain many more things out of this conversation, right. रेज मनी यही चाहता है कि सभी लोग समझ पाए आज इस दौर में जहां आप सभी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के साथ कहीं चलना चाहते हैं. दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन हेल्प यू एंड गाइड यू. वी वेलकम योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज ऑन दिस सेशन एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन सून. थैंक यू. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय. थैंक Yeah, यू, यश. you, yeah.